Right, you're watching India Today. I'm Nabila Jamal. The court-appointed survey commission has finally submitted a Gyanvapi mosque survey report before the Varanasi court. Shivling in a mosque, signs of Sanatan culture, has been mentioned very clearly in that survey report as per India Today, as it's found the survey report's details where it speaks of Sanatan culture signs that were found on one particular wall of that mosque's basement. The survey also mentions a lotus, a damru, a trishul, many other signs related to the ancient temple that's been found inside that mosque. Now, the chip of that videography of the survey has also been submitted by the commissioner to court. This is the report of the survey that was conducted between 14th to 16th of May and was submitted in court after much resistance by the Muslim side, citing the Places of Worship Act 91. However, the court allowed for a survey, and now the survey findings have been submitted in court. And amid this whole showdown, the Varanasi court has asked to desist from taking up this matter. The Supreme Court had to step in because you had the Muslim side appeal to the Supreme Court saying that this entire survey itself is illegal, etc. Here is the Supreme Court that today intervened and said that the matter will be taken up in court tomorrow, but in the meanwhile, the Varanasi court must not take up the survey findings, must not deliberate on it until the Supreme Court hears this matter in court tomorrow. In fact, on Monday, the lawyer for the Hindu side had claimed to have found Shivling inside the Gyanvapi mosque. The Varanasi court had officially sought a survey report on Tuesday. Today was the day when the court, the Varanasi court should have ideally taken up the survey findings and dissected it and heard the matter. But the Supreme Court now will be, of course, taking up this matter tomorrow, has asked the Varanasi court until then to hold on. आप लोगों ने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया? जी, एकदम टाइम पे सबमिट कर दिया। 10:15 में सबमिट हो चुका है। क्या आपने सबमिट किया है? क्या क्या है जो आप हमें बता सकते हैं? अब वो देख सकते हैं आप, जो रिपोर्ट में था वो हम लोगों ने सबमिट कर दिया। जो जो चीजें थी, ध्यान आकृष्ट कराया गया था, प्लेंटी फॉर डिफेंडेंट की तरफ से हम लोगों ने सबमिट कर दिया है। इसमें कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे फोटोग्राफ्स, इसके अलावा जो नक्शे हैं वो भी आप लोगों ने सबमिट? जी, एकदम जितनी फोटोग्राफ्स थी और वीडियोग्राफी हुई है दौरान कमीशन कार्रवाई अंडर सील है, वो हम लोगों ने सबमिट कर दिया है। तो ये कितनी फोटोग्राफ्स होगी, किस तरह की फोटोग्राफ? ये जानकारी नहीं है। जो जो फोटोग्राफ हुई है, सारी चीजों की फोटोग्राफी कराई गई है, सब सबमिट कर दिया गया है। The portion of 15th century mandap under the mosque courtyard now filled up, ये बताया गया है। ये filled up, ये बताया गया है कि the portion of the 15th century mandap under the mosque courtyard is still existing, ठीक है। और ये दिया गया है कि ये डॉटेड लाइन शोज करता है, यही मास्क है। वो जो इसमें जो वजू खाना है वो बस समझ लीजिए। ये प्रिंसिपल डीटी हैं जो 100 फुट के हैं, अंदर दबाया गया है पत्थर की पटिया से मेन गुम्बद के नीचे। ये बगल वाला है, ये बगल वाला है, 3 गुम्बज ये हो गए। उसके गुम्बज के नीचे हमारा शिखर तक जो है आया है कि मंदिर यथावत है अभी भी। और ये जो आया है, ये यहीं पर वजू खाना बना हुआ है, जो यहाँ पर तारकेश्वर का मंदिर रहा है। ये लिखा है तारकेश्वर, पढ़ा जा रहा है नंगी आंखों से। ये जो लिंग निकला है, ये तारकेश्वर भगवान का लिंग है। रिपोर्ट में क्या क्या चीजें लिखी हैं, जितना हम पढ़ पाए हैं उसमें आप लोग अपने जो शिलापट्ट है उस तक का जिक्र? हाँ, मैंने ये दिया है कि जो विवादित स्थल है उसकी जो पश्चिमी दीवार है जी, उसके कुछ अंश जो बाहर टुकड़े मिले हुए, जितना मैंने किया है उससे मेल खाते हैं जी। और क्या कुछ हिंदू आकृतियां भी मिली जो रिपोर्ट में पढ़ पाया हूँ मैं, उसमें लिखा है आपने कि कुछ हिंदू आकृतियां हैं, कमल का फूल है, नाग है? हाँ, मुझे देखने से मतलब वही प्रतीत हुआ कि ये नाग का जो है ऊपर ही टूटा हुआ फन टाइप का था। तो उसकी वीडियोग्राफी भी हुई है, जब न्यायालय में चलेगी तो आप लोग देख सकते हैं। विष्णु जी का नाग, शेषनाग होता है उस तरह का? हाँ, उसी तरह का। आपने उसमें ये भी मेंशन किया है कि प्रशासन की तरफ से पूर्ण सहयोग आपको नहीं मिला? हाँ, जो जब तक मैंने किया हुआ है तब तक जो है, अब जो भी रहा हो, प्रशासन को क्लियर आदेश न रहा हो या जो भी उन लोगों को डिफेंस रहा हो, मैंने आदेश दिखाया और उन्होंने एक दूसरे के ऊपर जो है अपना भार सौंपते रहे कि मेरे पास अधिकार नहीं है अंदर प्रवेश करवाने का, और उनके पास है, उन्होंने कहा उनके पास है। इसी तरह जो टाइम बीत गया। वीडियो चिप है, गाड़ी का जो चिप है वो हम लोगों ने फाइल कर दिया। 3 बॉक्स में अंदर सील है, उस पर सील कवर लगा हुआ है और माननीय न्यायालय के लिए दाखिल हो गया और प्रिजर्व है। कब तक आने का है उम्मीद? इस पे कोर्ट क्या प्रोसेस रहेगा?
चल रही है, जो माननीय न्यायालय आदेश करेगा उसको देखा। आपने रिपोर्ट सबमिट कर दिया? हाँ, रिपोर्ट सबमिट कर दिया गया। कहाँ जज के चैम्बर में आपने? कोर्ट में आगे उन्होंने क्या कहा? अब कुछ नहीं, उसके बाद तो अपना पुकार कराया है, उसके बाद जो वादी पक्ष के लोग उपस्थित रहेंगे। कितने पेज की थी सर? करीब 10-15 पेज। देखिए, सर्वे तो माननीय न्यायालय ने आदेश दिया था, उस अनुसार जो है कि पक्ष विपक्ष दोनों लोग की सहमति से अच्छे से हुआ है और अच्छे से हुआ है। पूरा न्यायालय को सौंप दिया गया। अब न्यायालय जो भी न्याय करेगा पूरा विश्वास है कि सत्य की जीत होगी। और मेन जो जहाँ पे शिवजी मिले हैं वहाँ पे हम लोग यही चाहते हैं कि वहाँ वजू न किया जाए। वहाँ पे मैंने सुना मछलियाँ भी हैं, तो मछलियाँ रहे, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं, जीव है वो, तो इसलिए उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वहाँ पे वजू जो किया जाता है वो ना हो। जब कमिश्नर अपना कमीशन रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कर देता है, कोर्ट पक्ष विपक्ष सबसे जो भी शेष पार्टियां होती हैं, पर जैसे इसमें डिफेंडेंट नंबर 1 to 4 हैं, उनसे आपत्ति इनवाइट करेगी, ऑब्जेक्शन की भाई ये कमीशन रिपोर्ट आ गई, आपके कुछ इस पे आपको क्या कहना है, एतराज़ है, आपत्ति है, वो दाखिल कर दो। फिर उस पर कोर्ट उसके फाइनल हियरिंग के लिए कि उसके एडमिशन पे कि पत्रावली पे उसको एविडेंस के रूप में ले लिया जाए, कोर्ट उस पर आदेश करेगी, फिर वो एक हर्फ उसका बतौर एविडेंस पढ़ा जाएगा। All right, let me quickly cut across to Samarth Srivastava, who's joining us live from Varanasi, right there at by the mosque. In fact, Samarth, India Today has found some of those survey findings, and that speaks extensively of the kind of Sanatan symbols that have been found on the walls located at the basement of that mosque. It speaks of a lotus, a damru, a trishul. This is huge. It's quite incriminating as per the committee when it carried out that survey. This kind of evidence is indeed incriminating, almost will vindicate the petitioner's plea, saying that yes, there was indeed a temple, we should be allowed to pray. What more has the findings really established? Exactly. What we got to know, these are the findings, as you just said, about lotus, about the Sheshnag, about that particular Damru of Lord Shiva, swastik. These are some massive things coming in to light when the survey took place, as per Ajay Mishra, Special Advocate Commissioner. Special Advocate Commissioner Vishal Singh too has the similar things in his report. That includes the Sanatan things. Sanatan, he has said in the report that various symbols related to Sanatan Sanskriti, that means of Hindu culture, has been found inside the mosque. Some portion has been tried to be distorted, while some is still remaining. Though there is also a mention of Shivling or fountain in the report, but by what in text it has been mentioned, it is yet to be known. But what India Today TV clearly accessed, what is in the report too, is the Sanatan Sanskriti symbols related to Hindu gods and goddesses. It also has something about the Tekhana, about the Damru, and about various other things. What are happening in the things right now? But as Supreme Court has ordered to stay, so we may expect something in Varanasi local court by tomorrow, because 2 more petitions were pending in this particular court regarding the offering prayers around the Shivling, or shifting of that namaz area to that Wazu Sthal area to somewhere else. But what is concrete is the survey report. Both the survey reports have been sent, and Ajay Kumar Mishra, as always, blaming Vishal Singh for his removal, while Vishal Singh claiming that yes, reports have been submitted, but he is remaining tight-lipped on the entire issue, like whatever is written in the report. But what we got so far is a clear indication that various things related to Sanatan Sanskriti of Hindu culture are found inside the mosque. All right, Samarth, thank you very much for joining us with those details. Now, we know that the report that India Today has found clearly speaks of extensive symbolism for the Hindu religion. That's what the survey findings have said, and that report has been submitted in court as of now. India Today has accessed the report, the only channel that gives you a clear understanding of what that report really has that's been submitted at the Varanasi court. Speaks of some of those symbols that have been found on the interior wall of a basement at that mosque. Now, the report of the survey that was conducted by Ajay Mishra, in fact, the report of that survey conducted by Ajay Mishra and Varanasi's Gyanvapi Mosque on the orders of the court on May 6th and 7th was submitted by the former commissioner.
In fact, in this two-page report, when he mentioned about getting the symbols and relics of Hindu religion, Mishra's report claims that idol of Shringar Gauri has been found during the videography. Not only Shringar Gauri, but remains of several other ancient Hindu idols have been recovered from the mosque site. An ancient lamp has also been found that was used to perform the puja, indicating that there was a temple before the mosque. The videography and the photography disputed site was done on May 6th and 7th. Varanasi court had removed him from its 3-member survey team on Tuesday for displaying irresponsible behavior towards the discharge of his duties. Now, this comes after it was alleged that he had deployed a personal camera person to leak information to the media. In fact, India Today is the only channel that has found the survey report, and we bring to you the exclusive details on what the survey has to say when it comes to symbols being found inside that Gyanvapi mosque. Now, remember, there was a lot of controversy, much resistance to carry out that survey, considering that the Muslim side cited the Places of Worship Act 91, which does not allow to change the religious character of any religious site post-independence. Post-1947. Now, Ajay Mishra has spoken on the same. Let's quickly cut across. रिपोर्ट में क्या-क्या चीजें लिखी हैं, जितना हम पढ़ पाए हैं उसमें आप लोग अपने जो शिलापट्ट है उस तक का जिक्र। हाँ, मैंने ये दिया है कि जो विवादित स्थल है उसकी जो पश्चिमी दीवार है जी, उसके कुछ अंश जो बाहर टुकड़े मिले हुए जितना मैंने किया है उससे मेल खाते हैं जी। और क्या कुछ हिंदू आकृतियां भी मिली जो रिपोर्ट में पढ़ पाया हूँ मैं, उसमें लिखा है आपने कि कुछ हिंदू आकृतियां हैं, कमल का फूल है, नाग है। हाँ, मुझे देखने से मतलब वही प्रतीत हुआ कि ये नाग का जो है ऊपर ही टूटा हुआ फन टाइप का था, तो उसकी वीडियोग्राफी भी हुई है। जब न्यायालय में चलेगी तो आप लोग देख सकते हैं। विष्णु जी का नाग, शेषनाग होता है उस तरह का। हाँ, उसी तरह का। आपने उसमें ये भी मेंशन किया है कि प्रशासन की तरफ से पूर्ण सहयोग आपको नहीं मिला। हाँ, जो जब तक मैंने किया हुआ है तब तक जो है, अब जो भी रहा हो, प्रशासन को क्लियर आदेश न रहा हो या जो भी उन लोगों को डिफेंस रहा हो, मैंने आदेश दिखाया और उन्होंने एक दूसरे के ऊपर जो है अपना भार सौंपते रहे कि मेरे पास अधिकार नहीं है अंदर प्रवेश करवाने का, और उनके पास है, उन्होंने कहा उनके पास है। इसी तरह जो टाइम बीत गया। नीचे से देखेंगे तो मंदिर की जो शिलाएं होती हैं, जो शिखाएं होती हैं, आप ये कह रहे हैं कि उसमें कमल का फूल है, स्वास्तिक के चिन्ह भी है उसपे। कमल का फूल, स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है इस तरह से तीनों ही गुंबद में। अब बता रहे हैं कि यहाँ ये जो तीनों गुंबद हैं उसके भीतर अगर मस्जिद के नीचे से हम देखेंगे तो उसमें कमल का फूल दिखाई देगा और स्वास्तिक के चिन्ह साफ साफ नजर आते हैं। आप जैसी आपकी दृष्टि पहुंच जाए, मतलब आपकी दृष्टि ने क्या देखा? हम तो आप ही की आंखों से देख रहे हैं ना, आपकी दृष्टि ने क्या देखा? मुझे तो दिखाई दिए स्वास्तिक के चिन्ह। क्या तीनों ही हिस्सों में थे? कुछ जगह छूट छूट के थे, एक लगातार नहीं थे। एक लगातार नहीं। कुल कितने स्वास्तिक के चिन्ह होंगे तीनों गुंबद में? गिना नहीं मैंने, इतना आपको नहीं पता है। बस एक आखिरी सवाल और, 16 ये जो 3 दिनों का आखिरी का सर्वे हुआ है उसमें आपने अपनी आंखों से क्या देखा? आखिरी सवाल। कोई कमेंट नहीं है इसमें, कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए, यहाँ पर अजय मिश्रा जी को आप सुन रहे थे। फिलहाल वो जितना सर्वे उनकी ओर से किया गया है उसके बारे में उन्होंने इस मैप के जरिए पूरी जानकारी दे दी है और इसके जरिए हमारे दर्शक समझ पाएंगे कि अब तक इनकी रिपोर्ट ये साफ तौर पे जाहिर करती है कि वहां पर जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि सिर्फ टोपी पहना दिया गया, यानी कि वो मस्जिद नहीं है, उसके भीतर मंदिर है और मंदिर के अंदर ये तमाम कलाकृतियां, चाहे शेषनाग के उसमें आगे का हिस्सा हो, उनके फन की नजर आती हो, वहां पर कमल का फूल हो, वहां पर माता की मूर्ति हो जो खंडित अवस्था में है, तो उनकी बातों से ये जाहिर होता है कि वहां पहले मंदिर रहा था, उसको तोड़कर मस्जिद बनाया जाता था, जो दावा इस वक्त अजय मिश्रा की ओर से किया जा रहा है अपने रिपोर्ट के जरिए। और वही रिपोर्ट अंजना उन्होंने अब कोर्ट में दाखिल कर दी है। आगे क्या होता है इस पूरे मामले में रहेगी आज तक की नजर। कैमरा पर्सन योगेंद्र। All right, now the Gyanvapi battle in the Supreme Court has been adjourned to tomorrow. The Supreme Court will hear the Gyanvapi case tomorrow again at 3 p.m. Supreme Court has also directed the Varanasi trial court to not hear this case today. In its order, the Supreme Court has directed the trial court to strictly act in terms of arrangement and to desist from taking further action. When the Supreme Court started the proceedings, the Hindu side sought adjournment of the hearing, seeking more time. The Muslim side has argued, saying that they fear demolition of the Wazu Khana as the hearing was on the Varanasi trial court. The Hindu side has also agreed to not pressing for demolition today.
हमने सुप्रीम कोर्ट से 1 दिन की मोहलत मांगी थी, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको कल 3 बजे के लिए सुनवाई पे रखा है। और उसी वक्त मुस्लिम पक्ष की तरफ से हुज़ैफ़ा अहमदी साहब ने कहा कि आज जब हम ये बात कर रहे हैं उसी समय ट्रायल कोर्ट भी प्रोसीड कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने मैंने अंडरटेकिंग दी कि ट्रायल कोर्ट प्रोसीड नहीं करेगा और हमारे वकील ट्रायल कोर्ट में कल तक के लिए बहस नहीं करेंगे, एडजमेंट लेके रखेंगे और कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद मामला आगे बढ़ेगा। All right, here you have the Gyanvapi Mosque survey report that India Today has found that speaks extensively of the kind of symbolism that has been found. Of course, it had to be taken up in court at the Varanasi court, but that was stalled after the Supreme Court intervened and said, do not hear the matter until the Supreme Court takes up this case tomorrow, 3 p.m. Anisha Batu also spoke to the Muslims petitioner's lawyer. Let's have a listen what they had to say. Today it so happened that the counsel for the plaintiff, Mr. Jain, was unwell. So there was a request from his side that he should be accommodated for a day. So naturally there's no question of opposing it. We said that okay, if he's unwell, then of course this could be shifted to tomorrow. And but in the meanwhile, the proceedings which are going on should not continue. So this is being accepted by the court, and the court has directed that the proceedings so far till tomorrow is concerned, only till tomorrow, they should not continue. Now let me cut across to Anisha Batu joining us live for more on that. Anisha, give us an understanding what the Supreme Court said today as it took up the case and then quickly deferred it for tomorrow 3 p.m. and very clearly asked the Varanasi court not to take up this matter until further notice. Well, yes, Nabila, the Supreme Court in its order has very clearly said that they will hear this matter tomorrow at 3 p.m. Until that time, the Varanasi court has been directed not to hear this matter. I'm just going to read out the exact wording that the court has used. The apex court in its order has said that we direct the trial court to act in terms of this arrangement and desist from taking up any further proceedings in the suit in view of the consensus which has been arrived here by the parties, which basically means that the Hindu side, because they are the ones who asked for an adjournment, they have assured the court they will not ask for any urgent hearing on their application before the Varanasi court. And the Muslim side had, of course, raised the objection that if there is no hearing, if there is no order from the Supreme Court, then for one, there are petitions already pending in the Varanasi court which could be heard, which are in the process of being heard. The report of the court commissioners are getting filed before the court. There could be some view on that taken. In addition, the Muslim parties have also argued that because of the ongoing proceedings in the Varanasi case, similar petitions, similar applications seeking sealing of mosques are being filed in other cases, in other Mandir Masjid disputes as well, and therefore there is an urgent need to hear this particular matter, which is why once the Hindu side said that they are not going to press these petitions at the moment, the Supreme Court has said they will hear this matter at 3 p.m. tomorrow, and they will consider all aspects, including whatever stand the UP government chooses to take, because remember, the court had issued notice not only to the Hindu petitioners, but also to the UP government, to the district officials, to ensure that there is no untoward incident in that area. The court had also on Tuesday directed the DM and police officials to ensure that at the same time they should make sure that whatever has been found in the temple, what is being claimed as a Shivling found in the masjid premises, that is preserved, and at the same time there is no interference or obstruction in the namaz in the mosque itself. So all of this will have to be now be considered by the court tomorrow. Back to you. All right, Anisha, thank you very much for joining us with those details. Tomorrow, 3 p.m. is when the Supreme Court is also set to take up that matter. We're going to continue tracking this coverage. Now, high-voltage political war has erupted over the Gyanvapi Mosque survey. BJP's Amit Malviya has called out the AIMIM chief Asaduddin Owaisi's hypocrisy over the issue, terming him a communal bigot. After Owaisi said that he won't let go of another mosque, Amit Malviya has reminded him of how he got 2 mosques demolished just to build a secretariat in Hyderabad. The SP chief, Akhilesh Yadav's controversial statement has now stoked a massive row.
While slamming the BJP, Akhilesh has said that in Hindu religion, wherever you put a stone under a tree with a red flag on it, it becomes a temple. Akhilesh's remark drew immediate criticism by the BJP. BJP spokesperson Shehzad Poonawalla has slammed Akhilesh Yadav for hurting Hindu religious sentiments. Meanwhile, you also have TMC MP Mahua Moitra, who's also mocked the Shivling claim by sharing a picture of Baba Atomic Research Center, saying that, hope this is not next on the digging list. एक समय ऐसा था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रखती गई थी। बीजेपी कुछ भी कर सकती है, बीजेपी कुछ भी करा सकती है। 1991 का एक्ट है, मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट उस पर ध्यान देगा। मुझे उम्मीद है कि जब यहाँ के अयोध्या का फैसला आया उसमें भी कहा गया कि ये हम और इश्यूज के लिए नहीं माना जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी जानबूझ करके संस्थाओं से खिलवाड़ कर करके ये फैसले करा रही कि जिनकी जिम्मेदारी थी सर्वे करने की, आखिरकार वो रिपोर्ट बाहर कैसे आ गई। और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। Akhilesh Yadav, who claims that Shri Krishna comes in his dreams, has mocked the Hindu Astha as well. He says that just by placing a rock under a people ka ped, it becomes a mandir. If you just place a red flag under a people ka ped, wo mandir ban jata hai. This kind of mocking of Hindu Astha is not surprising from somebody whose politics has been about taking credit and feeling pride in firing bullets on innocent Ram Bhakts. उनके लिए वही तालिबानी विचारधारा के लोग चाहिए उन्हें, और उन्हीं के लिए वो सरकार बनाते हैं। कभी देशवासियों के लिए तो काम करना उन्हें आता नहीं है। अगर आता होता तो इस तरह का बयान ऐसे समय पर देना कि अगर न्यायालय में भी वो विश्वास रखते होते तो ये बयान न देते, क्योंकि मामला न्यायालय में है और न्यायालय के निर्देशानुसार ही वहाँ सारे काम हो रहे हैं। तो न्यायालय का सम्मान कर लीजिए आप। अगर आपको आस्था में विश्वास नहीं है तो देश में और देश के संविधान में कम से कम विश्वास रखिए। तो इससे तो साफ हो जाता है कि उन्हें ना तो आस्था में विश्वास है और न देश के संविधान में। ये इस तरीके की झूठी कवायद फव्वारा है, तो उसमें पानी कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, और बगैर मोटर के औरंगजेब के बाप ने कौन सी टेक्नोलॉजी पैदा कर ली थी फव्वारा चलाने की। और ये दुनिया का पहला फव्वारा है जो जल स्तर से 2 फीट नीचे है। सभी फव्वारे जल स्तर से 3 फीट 4 फीट ऊपर होते हैं, ये 2 फीट नीचे है। तो इस तरीके के झूठ और मक्कारी के बयानों पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए।